I hope you all are doing great. We have been through a rough patch of our lives past few years, which directly or indirectly affected our lifestyle as a student and even as a parent. Our today's session, Pandemic Parenting, is the solution for all your problems. Our super talented national trainer JFM Amandeep Sethi ma'am will lead us to the ways through which we can set our lifestyle back on track. With that, I welcome our trainer and everyone present here. Uh, Over to JJ Hitansh. Thank you. And yes, good evening all. I am JJ Hitansh Patel and on behalf of JCI Surat, I feel proud to introduce our today's trainer. She is a well-known name in parenting world over the past decade across the country. She belongs to the beautiful valley of Guwahati and has claimed the title of Mrs. Kanpur in 2014. She is a DMLT professional and has altered the lives of many by showing them the right direction through their hidden talents. With the aim of making the society suicidal and depression free, she has explained parents that talking to a counselor doesn't really mean that someone has a mental problem. And believe me, friends, with her communication skills, she has succeeded in achieving this goal. Talking about her JCI journey, her love for community work made her join JCI and has reached the pinnacle of provisional national trainer. She believes in bridging the gap between parents and kids, and thus she is serving as a NOM coordinator for Garima and gender equality. When not busy with her profession, she loves to travel, drive, and train people. So let's welcome a person who believes in gratitude, helping the less fortunate, and a strong believer of gender equality. JFM Amandeep Sethi ma'am. We welcome you, ma'am. Thank you. Over to you, man. Thank you, Hitesh. First of all, I would thank the chairman, I would say Swaraji and Ankit ji for asking me to join you all for today's session. It's really good that because of pandemic, one thing is that we are within reach of each other. Maybe physically we might not be able to meet, but through the platform like Zoom or Google Meet, we are able to meet. It is just a kind request to everybody. It would be nice that if you all switch on your videos, your live photos would make me feel that yes, I'm a part and actually I'm speaking to some people. I could can see. And Hitesh, the way you just read out my introduction, really good to hear it. I just remember by hearing your this introduction. Recently, I had been to Guwahati, where few JJs they just came. They were in a. We had a physical meeting, but just because of pandemic, it was all of a sudden it was being called for a virtual one. The kids had also joined the meeting, and it was a meeting of more than 120 participants online. They were there. So it was really nice. And after the end of the meeting, I just got a call from the president and she wanted to see me. And I saw two kids also coming along with them. And just like Hitesh is so cute, same, they were also really cute and they came and they just spoke to me about their experiences and what they learned from the session. So it is nothing like that. Only our parents are going to take away something from the session. Even the kids are going to take something really good from the session. I see we are around 13 people in this session. So it's really good that, yes, we all know when we joined JCs means joining a responsibility and young citizens. Hitesh, how old are you? 10. 10. So if somebody is having a spark at the age of 10, so I can just see some good leaders coming up. And Swara, you are also doing a fantabulous job under the able leadership of Ankit ji. Really Thank you. good going. I Thank would you, say ma'am. you all are kids. So it's really good going. Now, parenting and
why kids they feel that yes, parenting is something which they should also know. That is the reason you all are part of the session. Because I wanted people to be over here, because I wanted to converse. It would be nice if you could just use your chat box, or even if you're not switching on your videos, you can just unmute yourself and speak if I'm asking something. Before I commence the session, I would just like to start with a small video, just with my introduction to it. I hope you all can see my screen. Yes, ma'am. Yes. This is what is pandemic parenting, or how it is, means pandemic में भी parenting होती है. Pandemic was something like this only, just like a swing. The things moved from one place to another. We were not on track. We were thinking what is going to happen next. What is our life up to? We all were there in our houses, locked in our houses, and we didn't knew what exactly to do during those days, whether it was our parents, whether it was our kids, beautiful kids. I'll start with a small video and then we'll go ahead with the session. And please do tell me after the video ends that could it relate to you in some way or the other or not. Can you hear it? Can you hear it? No, ma'am. Just a second. No, ma'am. I'll just restart it. Just a second. Now can you hear it? No, ma'am. It's still not audible? No. In the screen sharing, there is, while we are sharing the screen on Google, on YouTube, Zoom, we can see that there is an audio button, but over here, while I'm sharing the screen, there is nothing such as an audio button. Can you help me out with it, Swara? ફેનિલભાઈ તમે એને કહી દો ને કે શું કરવાનું છે. Ma'am, can we share the screen, play the video on behalf of you, ma'am? Yes, you can play the video on the behalf of me. Yeah. So can you please? जो प्लेट उठा के ले जा रही है. You know this video? The video is Emotional and Loving Mother. You can just find it on YouTube. It is a very beautiful video saying and telling the emotions what are really important for a child to learn also, and how a mother tackles when she is living in a family, how she tackles the kids when they are doing something right or sometimes when they are doing it wrong. It's a very beautiful video portraying how she has to contradict with her family to stand for her kids,
to understand where they are going wrong. Are you able to share it? Yeah, ma'am. Actually, we are finding the video. Can you please tell me the name actually? It is, you can write most emotional and loving mother, Yes, and yes, it yes, 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 sir. Yeah. I can see another beautiful face of Poojan Pandya. Hitesh, you can sit down. Hitesh, you study in which class? Ma'am, fourth class. Fourth class. Are you going to the school? Yes, Yes. Whom do you love more, your mother or your father? both. Both. I don't believe this. I love my mother more than I love my father. 50-50. 50-50. Oh, wow. That was a very modest answer. You don't want either of your parents to be angry with you. है ना? Yes. Do you have a sibling? Do you have a brother or a sister? No? Swara, do No. you have a sibling? Yes, ma'am. So what is the difference you find between him and him or her and between you? She likes my mother more, and I like my father more. Okay, that is the only difference. Okay. Yeah, and I am more like my father, so I get attached and attracted to him more, and Mm-hmm. she is more like my mother. Okay, good, good, good. So Yeah. is it taking time so I can go ahead with my presentation? Is it taking time? Penil bhai? I think I'll go ahead with the presentation. In between, if it starts, it would be fine. Okay. As I told you that this was all about how things were going. We were always thinking about whether the things are going right. हम आगे जा रहे हैं जिंदगी में कि हम पीछे जा रहे हैं. यही सोच रहे थे चाहे हमारे पेरेंट्स थे, चाहे हम बच्चे थे. So this is all about pandemic parenting. Parenting during the pandemic. Really important और इसमें क्या difference था? बहुत सारी चीजें थी. What is first of all parenting? We have kids and all. You all can use your chat box and tell me what exactly is parenting, or I would love to hear your voice in which you speak about what is parenting. Parenting, it is actually one of the most beautiful phase of a man's or a woman's life. When we actually become role models. हमें ये नहीं पता होता है कि हमारे बच्चे जो जो भी हम कर रहे हैं वो एक्चुअली उसको इमिटेट करते हैं. As Swara was telling that she is basically doing things like, or what she is fond of doing things what her father likes, and her sister, she is doing the things what her mother likes. So what is this? This is actually parenting, means directly or indirectly we are becoming role models of our kids. We are trying or we are doing things which are being followed by our kids. वो हमारी चीजों को फॉलो करते हैं. आप में से कितने लोगों ने कोई एक ऐसी चीज, कोई अच्छी चीज जो अपने पेरेंट की फॉलो करिए, प्लीज अनम्यूट करके बताइए. इट कैन बी योर मदर ऑल्सो, इट कैन बी योर फादर ऑल्सो, एनीबडी. हितेश, कैन यू टेल मी? हितेश, Swara, will you be able to say? Um, Yes, Swara. Anything uh, what you do? my father, he likes to balance his work and his family. Sometimes he gets frustrated by his work, but he tries to give more time to family when he can. So I like that he balances everything in his life. Okay, that's really nice that you are able to do, you have learned how to balance the things in life from your father. If I'm not mistaken, this is what you want to say. Yeah. Yes.
Yes, Ma'am, ma'am. My yes, mother yes, taught Hitesh, me you can that unmute yourself. always apologize if it's your mistake. Okay, you have realized one thing that he says that it is your mistake. Oh, that's really nice. We have very good. I would really say very nice, Hitesh. It's not only that you are saying that you realize your mistake is what you are learning, but at the same time, the courage to come and speak about this thing is also one thing which is really good. I really appreciate you for the same. So, what is happening in parenting is that our parents are doing such things which we are, means they are not asking us to do something. If you, as you said, balance, they are not asking you that you should learn balancing the things, balancing your time, managing your time, and all those things from your parents. But you are doing it. The same thing. Hitesh's parents, they have taught him one thing which is really good is that if you are doing some mistake, you need to accept it. You need to. I have a very beautiful video also related to what Hitesh has said. I'm just waiting. First video will be played, then I'll be sharing the next video too. So, parenting is all about learning new things, unlearning the old, and keep on learning things and making our kids learn new and new things. Our parents, we all have been using smartphones, isn't it? We know how to use a laptop, we know how many things. For example, if I didn't knew something, I called up Swara. Okay, Swara, can you help me out with this thing? Isn't it? So it's हमें as a parent, हमें as a child कभी भी इस बात का बुरा नहीं लगना चाहिए, कभी हमें ये बात सोचनी नहीं चाहिए अगर मुझे नहीं आता है तो मैं अगर किसी से पूछ लूंगी तो मैं छोटी महसूस हो जाऊंगी, नहीं, इससे मैं छोटी महसूस एंड इज ओपन टू लर्निंग समथिंग न्यू, शी डजंट फील ऑफेंडेड। तो ये चीज अगर मैं करूंगी तो मेरे बच्चे को भी ये चीज कभी भी ऐसे नहीं लगेगी, अगर उसे कुछ नहीं आता होगा वो सामने वाले इंसान से पूछ लेगा। ओके ओके, व्हाट इज पेरेंटिंग? बेसिकली इट इज अ फुल टाइम जॉब। आप में से कितनों की मदर्स होम मेकर्स हैं? होम मेकर्स, या अगर हम सिंपल टर्म्स में बोले हाउसवाइफ्स हैं, किस किस की मदर? हितेश, आपकी मम्मा क्या करती हैं? Sora, what does your mother do? My mother is a principal in a government school. Okay, okay, really good. Yes, हितेश, आपकी मम्मा क्या करती हैं? Yes, ma'am. My mother is a counselor. Okay, your mother is also a counselor. Oh, wow. But हमारे बीच में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी मदर होम मेकर्स होती हैं, तो वैसे भी पेरेंटिंग इज अ फुल टाइम जॉब। आप, if your mother is a principal, your mother is a counselor, even when she is going to work, वो जाने से पहले अपने बच्चों के लिए बहुत सारी चीजें करके जाती है और आके भी बच्चों के लिए बहुत कुछ करती है। Their main responsibility is taking care of the kids. बच्चों ने खाया नहीं खाया, बच्चों ने अपनी पढ़ाई करी नहीं करी, बच्चों की ट्यूशन पहुंचे नहीं पहुंचे, ये सारी चीजें वो देखती हैं। And as you said, mother is a counselor, mother is a principal. Even if your mother is not educated also, she'll teach you life's lessons. She'll teach you so many things which books cannot teach you. Helping people, ये कौन सिखाता है? हमारी मदर हमें सिखाती है, हमारे फादर सिखाते हैं। नर्चर किड्स, कि आप अच्छे बच्चे कैसे बनो, ये भी हमारे मम्मी पापा सिखाते हैं। एंड चेकिंग, इस स्क्रीन में कुछ आपको गलत लग रहा है? कुछ भी, ये वाला जो स्लाइड है इसमें कुछ गलत लग रहा है? रीड करो। चेकिंग की स्पेलिंग ये मैंने पर्पसली ऐसे लिखी है, रीजन कि आप इसको चेक करते हो कि नहीं करते हो। तो हमारे मम्मी पापा ने, हमारे पेरेंट्स ने हमें इतना पढ़ाया लिखाया है कि हम सही और गलत के बीच का फर्क पहचान सकते हैं। So we are so blessed that our parents are doing such. This is what is parenting. They have taught us what is right and what is wrong, how things can go right, how things can go wrong, where we can be right, where we can be wrong.
Life before pandemics. How many of y'all did miss the school? किस किसने स्कूल मिस करा था एंड घूमना मिस करा था, पार्क में जाना, स्पोर्ट्स करना, पार्टीज करना, स्टेज पे खड़े होकर बोलना, किस किसने मिस करा था? किसी ने करा था? प्लीज अनम्यूट करके बताइए। यस मैम, मी। अच्छा, आपने मिस करा? क्या क्या मिस करा और कैसे मिस करा, बताओ। मैम, स्कूल जाना, फ्रेंड्स से मिलना, मस्ती करना। अच्छा, तो आपको अच्छा लगता है ये सब? मुझे तो लगता यस है मैम। घर पे बैठ के लैपटॉप के सामने और मोबाइल पे गेम खेलना ज्यादा अच्छा है। नो मैम। नो मैम। अच्छा, पूजन, you would like to say something? Somebody is by the name of Poojan. Krish is also there. कोई और भी अनम्यूट करके प्लीज बोल सकते हैं? यस। क्या क्या चीजें आपने मिस करी और उसमें एक्चुअली क्या मिस करा? फ्रेंड्स के साथ अगर मस्ती करनी मिस करी है तो हमने एक्चुअली फ्रेंड्स को मिस करा है, उनके साथ जो हम टिफिन शेयर करते थे वो मिस करा है। एंड स्कूल में जब हम जा रहे होते थे, कभी कभी एक्टिविटी क्लास में जाके बैठ जाना क्योंकि क्लास अटेंड नहीं करनी है, ये मिस किया है। स्टेज पे खड़े होकर गाना गाना, डांस करना, ये सारी चीजें मिस करी है, इजंट इट? यस और नो? तो ये चीजें पैंडेमिक के पहले थी एंड होप सो जिस तरीके से अभी चीजें ओपन हो रही हैं, ये चीजें आपको लाइफ में वापस मिलेंगी, है ना? उसी तरीके के आपके पेरेंट्स ने भी मिस करा है कि आप लोग हॉलीडेज पे साथ पे नहीं जा पाए हो, है ना? रोज सुबह उठकर एक स्कूल आपको भेजना पेरेंट्स ने मिस करा है। कभी पार्क में आप लोग खेल रहे हो या स्पोर्ट्स कर रहे हो, या हम जेसीआई के इतने इवेंट्स जो करते हैं, जो हम पहले फिजिकली बहुत ज्यादा करते थे, हमारा जो इवेंट्स होते थे जेसीआई वीक में, वी यूज टू डू सो मेनी बिग बिग इवेंट्स, वी आर डूइंग इट, but now this year we are going to make it much more larger, like much more bigger, which we actually missed during the pandemic. So these were the things. How to use this time? अब कोई भी टाइम है, now it is pandemic or it is not pandemic, है ना? Before we start with this thing, we have our video, so I'll stop the screen and we'll start with the video. Yes, Swara, you can go ahead with this video. Yes, the video can be played. Volume is not there. Swara, the volume is not there. क्या जरूरत थी थोड़े से इतना गुस्सा करने की? जरा सी बात तो थी। ₹10 के लिए छोरे ने भूखा मारेगी क्या? ऐसा क्या कर दिया इसने जो प्लेट उठा के ले जा रही है? ₹10 तो लिए थे तेरे पर्स से, कोई पड़ोस से तो न लाया था? मेरे पैसे लिए थे इसने, तेरे बाप के नहीं। छोटे घर की है ना, तेरी माँ ने कुछ तुझे सिखाया नहीं है? जान दे, ये तो तुझे खाना देगी ना, तू मेरी प्लेट से खा ले। तैं अपने खाने की चिंता कर।
उसने 10 रुपए लिए ना हैं, चुराए हैं। आज चोरी की है, कल न जाने क्या करेगा। और अगर मैं इसकी मां की जगह होता ना, तो 2 दिन तक इसको खाना नहीं देता। बहू, ठीक किया है तूने। खा ले। ये देखो। See, such a beautiful. Swara, the video can be stopped. See, such a beautiful message. ये चीजें हमारे साथ लाइफ में बहुत बारी होती हैं. Kids, please remember one thing. कि अगर मम्मा आपको किसी बात के लिए, अगर बाय चांस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो आपको जल्दी जल्दी, आजकल की जो मदर्स है ना, वो पनिश भी नहीं करते हैं, पर अगर आपको किसी बात के लिए पनिश कर रही हैं, गुस्सा कर रही हैं, सो दे वांट यू टू बी बेटर ह्यूमन बीइंग्स. एंड मदर्स, आई वुड से कि अगर आप अपने बच्चे के लिए अगर थोड़े स्ट्रिक्ट भी होते हैं, तो आप कभी भी गलत नहीं हो. Because you are the only person on this planet, means mothers and means father, are the only 2 person on this planet who never want their kids to fail. Kids, remember one thing, there are only 2 people on this planet, on this धरती, जिनको कभी भी ये चीज अच्छी नहीं लगेगी कि आप जिंदगी में कभी भी गलत हो. और एक चीज याद रखना बच्चों, कि आपके पेरेंट्स जो है ना, आपको कभी भी गलत बात नहीं सिखाते, वो हमेशा आपको अच्छी बात सिखाते हैं. तो अगर वो कभी गुस्सा हो रहे हैं, कभी आपको गुस्सा कर रहे हैं, तो ये मत समझना कि वो आपके अगेंस्ट है. यस और नो. चोट लगती है तो हम डेटॉल अगर लगाते हैं तो ज्यादा दर्द होती है ना 1 मिनट के लिए. तो अगर पेरेंट अगर हमें कभी गुस्सा कर रहे हैं, तो वो हमारे जर्म्स क्लीन कर रहे हैं, हमें अच्छा कर रहे हैं. यस और नो. हमारे हेयर हैं, अगर उसमें टैंगल्स हो जाते हैं तो हम ब्रश करते हैं तो थोड़ी सी दर्द होती है, बाद में सब ठीक हो जाता है. तो अगर पेरेंट्स हमारे लाइफ में वो टैंगल्स रिमूव करते हैं, वो हमारी लाइफ स्मूथ बनाते हैं. सो नेवर थिंक योर पेरेंट्स आर रॉन्ग. They have good experience. I know kids, you all are smart kids. You know how to tackle each and everything in a much more better way. You know how to handle things. But remember one thing, that we as kids might be sometimes wrong. पेरेंट्स आपको, आप गलत होगे भी तब भी आप अपने पेरेंट्स के पास जाइए. एंड पेरेंट्स, एक रिक्वेस्ट है आपसे भी कि बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस दिलाइए कि अगर वो गलत भी होते वो आपके पास आए, आप उनकी गलती को सुधारें, बाद में उनको जिस तरीके से पनिश करना हो. लेकिन याद रखें कि बच्चों के अंदर ये कॉन्फिडेंस आप ही ला सकते हो कि आप कभी भी, बच्चों अगर गलती हो जाती है हमारे पास आओ, सिर्फ अल्टीमेटली हम ही बचा सकते हैं. ऑब्वियसली आप बच्चों, आपके फ्रेंड्स बचाने की कोशिश करेंगे,
लेकिन जितनी हेल्प आपके पेरेंट्स कर सकते हैं उतनी कोई नहीं कर सकता है, ये याद रखिएगा. ओके, लेट मी जस्ट गो अहेड विथ इट. यस. How to use this time? How to use the time means whether it is pandemic or even the new normal also, we have to do one thing. How many of y'all, I do not know, are into the habit of reading? Please develop the habit of reading. The people who read more will have better vocabulary. They would be better in so many things. डू रिमेंबर दिस थिंग कि उन्हें जो उनकी जो वोकैबलरी है वो हमारी वोकैबलरी से बेटर होती है, उनकी नॉलेज हमसे ज्यादा बेटर होती है. हम सबको भगवान को प्रे करना चाहिए क्योंकि भगवान हमेशा रहते हैं हमारे साथ. वो हमें सही और गलत करने से रोकते हैं, हमें समझाते हैं, और हमारे पेरेंट्स आर ऑल्सो नथिंग लेस देन गॉड. Parents, again, all these things will only happen if you are doing it, then only your kids will be doing it. Eating together. एक टाइम दिन में, मुझे मालूम है मॉर्निंग में कितनी बारी साथ में नहीं खा सकते, लंच हम साथ में नहीं कर सकते. प्लीज डिनर टाइम आप ऐसा बनाइए जिसमें आप और आपके बच्चे एक साथ खाना खाएं. और जब हम खाना खाएंगे, ये जैसे मेरा मोबाइल फोन है, हम इसको अपसाइड डाउन रखेंगे जिसमें स्क्रीन ऊपर नहीं होगी, एंड सब लोग अपने फोन्स अलग रखेंगे. एंड क्योंकि वो टाइम होगा वी टाइम. व्हाट इज वी टाइम? वी टाइम is where we all are together, where we as family is together. Mama is eating, Papa is eating, kids are eating, Dadu Dadi, Nanu Nani, Chacha, Bua, whatsoever is your family. That is we time. Playing. Why playing is important? Playing is really important क्योंकि अगर हम खेलते हैं तो हमें एक चीज लाइफ में पता चलती है कि हम जिंदगी में गेम जब भी खेलते हैं हमेशा हम जीतते नहीं हैं, बहुत बारी हारते भी हैं. और लाइफ में भी बहुत बारी हम ऐसी कोई सिचुएशन होती है, कुछ कुछ चीजों में हम हारते हैं. डेवलप हॉबी. नाउ व्हाई डू वी डेवलप हॉबी? As my introduction was being read, so it was being told that she loves traveling, she loves driving, and she loves training people. तो इस तरीके से मेरी हॉबी है कि जब मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है या कुछ भी होता है, my hobby is that I drive. I might drive for an hour. I listen to music. I travel. 2-3 months में मैं जरूर ट्रैवल करती हूँ, कभी कभी ज्यादा भी ट्रैवल कर लेते हैं. तो जो भी आपकी हॉबी हो, आपको गाना गाना पसंद है आप गाना गाइए, आपको डांस करना पसंद है आप डांस करिए, आपको लिखना पसंद है आप लिखिए, जो भी है. एंड पेरेंट्स, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक आउट देयर हैबिट. उनकी क्या हैबिट्स है? आर दे व्हाट यू से फिनिशिंग देयर वर्क ऑन टाइम, वेदर दे आर डूइंग द थिंग्स ऑन टाइम, और उसके साथ साथ उनकी जो भी हैबिट्स हैं. क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं जैसे बड़े बड़े होते जाते हैं, आज के टाइम पे एडिक्शंस आर रियली कॉमन. छोटे बच्चों के अंदर आज के टाइम पे स्क्रीन टाइम एडिक्शन इतनी ज्यादा हो गई है. ये सब चीजों को प्लीज चेक करें और ये सब चीजों पे प्लीज ध्यान दें. मी टाइम, अभी तो हमने वी टाइम देखा था, अब मी टाइम. कोई मुझे बताएगा मी टाइम क्या होता है? एनीबडी प्लीज, मी टाइम क्या होता है? कोई भी, एनीबडी. अपने आप को टाइम देना. अपने आप को क्यों टाइम देंगे हम? बताओ आप प्लीज. मुझे अपने आप को क्यों देना है? मैंने तो सबको दे दिया है टाइम, अब मुझे अपने आप को भी देना है, क्यों? सोचो, मुझे अपने आप को क्यों टाइम देना है? यस, क्योंकि अगर मैं अपने आप को टाइम नहीं दूंगी, मैं अपने आप के बारे में नहीं सोचूंगी, अपनी एनर्जी को री एनर्जाइज नहीं करूंगी, तो मैं दुनिया को क्या दे सकती हूं? मैं दूसरों की हेल्प कैसे कर सकूंगी? तो मी टाइम इज रियली इंपॉर्टेंट. पेरेंट्स, ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है. बच्चों, ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि वीक में चाहे 1 दिन हो चाहे 2 दिन हो, आपको अपने लिए टाइम देना बहुत जरूरी है. ये याद रखिएगा, अपने लिए टाइम देना बहुत बहुत जरूरी है. कि आपको ये होना चाहिए कि आप
अपने लिए क्या, अगर आपको अपने को लगता है कि जैसे मेरे लिए मी टाइम क्या होता है, हैविंग अ कप ऑफ टी along with biscuits, enjoying it without any phone and sitting for 5 minutes in the morning. Or for me, me time is switching on music and listening to good music. That is me time. और आप ये करके देखो अपने लाइफ में, आपके लाइफ में डिफरेंस पता है क्या आ जाएगा? डिफरेंस ये आ जाएगा कि जब आप इस तरीके से मी टाइम अपने आप को दे रहे होंगे, तो आप उसके बाद जब वर्क करोगे तो आप बेटर वर्क कर सकते हो, आप बेटर एनर्जी के साथ कर सकते हो। ये चीज हो जाती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, बेस्ट यूज। अब पेंडेमिक में आप एक चीज जरूर जो यूज कर सकते थे, इवन व्हेन इट इज नॉट पेंडेमिक, गुड टच एंड बैड टच अपने बच्चों को बताएं। एंड मेरे ख्याल से काफी बच्चों के स्कूल्स में भी बताया जा चुका होता है कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। कोई मुझे बताएगा गुड टच या बैड टच के बारे में? जब आपको लाइक आपकी फैमिली में से या कोई टच करे जो आपको कंफर्टेबल लगे, वो गुड टच होता है। और जब कोई स्ट्रेंजर या आपको जब पसंद नहीं आता कि कोई और आपको टच करे, वो बैड टच होता है। ओके, इसके अलावा who's gonna tell me what is good touch and bad touch? Anybody? What is good touch and bad touch? Yes, anybody will tell me what is good and bad touch? Nobody? What is good and bad touch? Yes. What is good and bad touch? Good touch, it is a touch which is basically, as she said, कि हमारी फैमिली में, हमारे फ्रेंड्स में जो हमें टच करे, मतलब टच कहाँ, लाइक हगिंग या हाँ, जैसे हम बड़े हो रहे हैं, हम मतलब टीनेज में जा रहे हैं, वी एज ह्यूमन बींग्स ना, एक छोटे से अगर हम एनिमल का एक एग्जाम्पल लेते हैं ना, एक एनिमल फॉर एग्जाम्पल आप एक डॉग ले लो या कैट ले लो, उसकी अगर हम टेल को पुल करते हैं तो वो काटने को दौड़ता है, यस और नो, उसको पता चल जाता है ना ये मुझे चोट पहुंचा रहा है। उसी तरीके से हम ह्यूमन बींग्स, and this is not only for girls, this is even for boys also, they need to understand कि कभी भी आपको किसी के छूने से अनकंफर्टेबल महसूस हो तो ये समझ सकते हैं ये एक बैड टच होता है। एंड बेसिकली बैड टच इज in your private parts. What is a private part? Private part is the part which we basically cover with our undergarments. Yes, for girls, it is the upper chest and which is what you say, down our belly. And for boys, it is down our belly. That is our private part. And it is the medium through which today we are speaking, just because the kids should understand this thing. And कितनी बारी क्या हो जाता है, girls, you all also need to understand one thing कि कभी भी आपके साथ कुछ इस तरीके का हो तो आपको उसके लिए बोलना चाहिए। सबसे पहले आप अपने पेरेंट्स से बात करेंगे, मदर से बात करेंगे। अगर स्कूल में कहीं कुछ होता है तो आप अपने टीचर से बात कर सकते हो। आपके पास यूजुअली क्या होता है, जब हम स्कूल में भी होते हैं, वी कॉल इट बडी सिस्टम। Whenever we are going to washroom, whenever we are going to playground, we have one person with us, a friend of us. So it is buddy, 1+1. So buddy system. So even if you are going out for parties, you all are, because एक दो बच्चे मैं देख रही हूँ grown up children है, तो आप लोग प्लीज buddies में जाया करिए, अकेले मत जाया करिए। Be conscious about the people who are there in your environment, whether they are drivers, whether people they are working in our families, whether they are cooks, they are cleaners. I'm not saying that everybody is bad, but still I believe that it is our responsibility to keep ourselves safe. हमें अपने आप को बचा के रखने के लिए अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। और कभी भी आपके साथ कुछ इस तरीके से हो,
प्लीज अपने पहले तो अगर स्कूल में हो रहा है तो टीचर के साथ, और घर आके पेरेंट्स के साथ। कितनी बारी शायद अगर कभी ऐसा हो, गॉड फॉरबिड, अगर कोई सुनने वाला नहीं हो, प्लीज यू कैन कॉल मी एनी टाइम, बिकॉज यू नीड टू एयर आउट। अगर आप अपने अंदर एयर रखोगे तो आप कभी ना कभी उस चीज को लेकर हॉन्ट होते हो और परेशान होते हो। आप लोगों के पास, गर्ल्स चाहे बॉयज कोई भी है, आपके पास नेल्स है, आपके पास टीथ है। इफ समथिंग somebody is trying to do something wrong, use them out. एनिमल्स को पता है, हम ह्यूमन बींग्स को भी पता है ये चीजें। और डरने की बात नहीं होती, आप गलत नहीं हो ये चीज समझो, ठीक है। Now what is teenage parenting? Now what is teenage parenting? Some teenagers I think have joined Yatharth. I can see Poojan is also a teenager if I'm not mistaken. Swara must also be a teenager. So teenagers, for you, I know that in India talking about so many things is still a taboo. Yatharth, do you have a sister? Unmute Yes. yourself. Yatharth. Yes. Do you have a sister? Hello. No. Okay, fine. No problem. We know that in what you say in JCI India, we have a great movement which is called the Nine Movement, or where we are celebrating or we are talking about menstrual hygiene. We know that menstruation is a part of a female, and it does happen to each and every female. So we talk about all those things. Gone are the days when it was a taboo, when people never used to speak. So as mothers, please, it is your responsibility to train your daughters about menstruation, and at the same time tell your son also about that these are the days, this thing can happen to your sister, and it is happening to me as well. I am also a mother, I am also a woman, and it happens to me as well. कितनी बारी ऐसा होता है, आप लोग घर पे देखते हो कि शायद मम्मी 3-4 दिन पूजा नहीं कर रही है, मंदिर नहीं जा रही हैं। किसी किसी फैमिली में तो आज तक ऐसा भी होता है कि वो लोग किचन में भी नहीं जाते हैं। तो ऑल दिस थिंग्स, तो नहीं मेरी तबीयत खराब है, इससे बेटर आप ये बता सकते हो दिस इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल। इट इज, वी आर एक्टिव सिटीजन्स, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ट्रेन द नेक्स्ट जनरेशन। Same way, I even tell my parents that it is your responsibility to tell your daughters, to tell your sons, because they are in a confused state of mind during the teenage, about, because there are lots of things happening. Their body structure is changing. Their things means they are confused कि अब मेरी body में ये नई चीज क्या आ रही है, means you all know about it. And even boys also have some sort of changes in their bodies. तो अगर एक मदर एक्सप्लेन कर देती है या फादर एक्सप्लेन कर देते हैं तो चीजें आसान हो जाती हैं, क्योंकि हो रही है बहुत सारी चीजें। बच्चे अपनी लाइफ में वैसे भी, अब पैंडेमिक भी है, उसके बाद ओके पैंडेमिक फिनिश हो गया, इट इज एपिडेमिक नाउ, एपिडेमिक है, स्कूल्स हम अब जाना स्टार्ट कर रहे हैं, मेरी बॉडी में ऑलरेडी चेंजेस आ रहे हैं, वेदर फिजिकल चेंजेस आर देयर, बॉयज के आवाज चेंज होनी स्टार्ट हो जाती है, ऑल दोज थिंग्स आर हैपनिंग, एंड उनको समझ नहीं आ रहा है। तो क्या हो रहा है, हम फ्रेंड्स के बीच में बात करते हैं, एंड फ्रेंड्स क्या है, फ्रेंड्स ऑब्वियसली इफ आई एम 20 years old, मेरे फ्रेंड्स 20 years के होंगे या 21 या 19 years के होंगे, तो उनके पास भी उतनी नॉलेज होगी या मुझसे एक आधी ज्यादा हो सकती है या कम हो सकती है, तो यू आर गेटिंग हाफ नॉलेज। सो पेरेंट्स, it is the right time to speak to your kids about the same. Explain them कि body में changes आएंगे, अगर girls हैं so they will have what you say bodily changes, they will all of a sudden their height would increase, and then they will have what you say, they will develop their chest, and all those things are going to happen. Same thing with the boys also, it has to be explained that they will start having hair on their chest, their what you say, voice will become coarse. ये सारी चीजें आप एक्सप्लेन करिए, तो क्या हो जाता है, बच्चों को ये लगता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ जो हो रहा है उसको समझ रहे हैं और मुझे समझा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, आप अपने पेरेंट्स के क्लोज आ रहे हो। The main purpose why parenting is required, it is to bridge the gap between kids and the parents. So अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती है तो आप भी अपने पेरेंट के पास जा सकते हो। अगर हम फ्रेंड्स के पास जाते वक्त कितने लोग सोचते हैं, मैं तो नहीं सोचती हूँ, बट अगर मम्मा से बात करनी होती है मैं सोचना पड़ता है ना,
प्लीज मत सोचो, जाओ और बात करो. बात करने से हल मिलता है, ये याद रखना बच्चों. Yes, kids, that is really important. And when it is adult things to be explained, the kids you are growing up who are basically out of their teens or in the late teens to become an adult. So you all should also know that why things are really right and what things are really wrong. With what you say, OTT platforms and all, nudity is very common. Yes, kids, you all, when we were small, things were totally different. Now things are totally different. So speak about each and everything to your parents. And I request the parents also to speak about things. I wanted to speak more about this but I find one or two, what you say, young kids. I cannot add up few things just because of their presence. So we can have a talk on this in the later session sometimes only with adult kids. Okay. For them, the curiosity would increase. What is this? What is that? So it is a limitation which we should understand the things. Okay. So the things are really important that start speaking to your parents, and parents, please start speaking to your kids. They need a year to speak. Yes. I just want, I have spoken a lot. I want to know if there are some questions which is there in your mind. You want to speak or you want to ask something. Anything. कोई क्वेश्चन भी आपके मन में आ रहा हो, प्लीज डू नॉट थिंक कि मैम क्या सोचेंगे, ये क्वेश्चन कैसा पूछा गया. कुछ भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो. एनीथिंग. एक पेरेंट्स और एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि छोटे बच्चों को अगर आप मोबाइल फोन्स देते हैं तो उनका ईमेल आईडी सेट करें उस पर, और उसी ईमेल आईडी के अकॉर्डिंग ही वो फिर यूट्यूब ओपन होगा, और जो चीजें उनके लिए आपत्तिजनक है, which are not good for them, will not be visible to them. Any questions which are there in your mind you want to ask, which you could even not ask your mother, you can ask me. Any question. Just think about it. Any questions which is there. Swara, is there any question in your mind? Pooja, Yatharth, any question in your mind? Yes. Ma'am, I have a question in my mind. Actually, my parents never restrict me in anything. Like if I want to hang out with my friends, they tell, okay, you can go and all. But sometimes when I want to go somewhere, I know that my parents won't restrict me, but still I hesitate to ask them and tell them that I am going there. For that, what should I develop in me that fear goes away? See, you are only afraid of one thing, that मुझसे कुछ गलती ना हो जाए, because they are giving me ultimate freedom. So when you have this fear, don't be hesitant, ask them. You know your limitations. I can, though I have not met you, from your voice, from your body language, it is very much visible that you know what your limitations are and you are not going to cross them. So be confident. You see, when we are not able to ask, that means we feel that somewhere we are wrong. So if we are not wrong, we can go ahead and ask. Yes? Anything, Poojan? Smiling. Ma'am, that's my younger sister. Okay, she's your younger sister. Yeah, okay. Her name is Bansri. Actually, that's some other email ID. Okay. What is her name? Bansri. बांसुरी की बंसरी. Something like that. वैसे कुछ meaning है? Yeah, flute. फ्लूट एक, देखो उसके अंदर लाइफ में फ्लूट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें इतने होल्स हैं, लेकिन उसने कितना अच्छा म्यूजिक देना होता है तो वो निकलता है. लाइफ में हमारी बहुत शॉर्टकमिंग्स हो सकती हैं. I might not be a perfect person for many things in life, but still I can give out something really good out of life. That is what I can learn from a flute. So isn't it, Bansri? मेरी लाइफ में भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, उतार चढ़ाव हो सकते हैं. मैं शायद दूसरों के कंपैरिजन में शायद इतनी इंटेलिजेंट हूं नहीं हूं, मैं उतनी स्मार्ट हूं नहीं हूं, जो भी है,
लेकिन फिर भी मैं बहुतों से बहुत बेहतर हूं। तो इसीलिए गॉड को हमेशा थैंक यू बोलना चाहिए कि गॉड ने हमें बहुत 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 खूबसूरत बनाया है। यस, एनीथिंग यथार्थ वांट्स टू आस्क? No, my all नथिंग? concepts are clear. ओके, एनीथिंग एल्स? Nitin sir wanted to ask something. यस नितिन सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। हाँ, हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे आते हैं। मैं ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट हूँ और पीडियाट्रिक बच्चों के साथ डील करते हैं, जो ओके सर। मेंटली डिसेबल बच्चे होते हैं, जिसको ऑटिज्म, डिसलेक्सिया, डेवलपमेंटल डिले होता है, वैसे बच्चे। जी तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो जिद्दी होते हैं, उसको चाहिए ही चाहिए, कुछ भी जी कर लो। तो उसको ओवरकम करने के लिए हम एक दो तरीका यूज करते हैं, मगर फिर भी आपके पास से थोड़ा जानना है कि उसको ओवरकम करने के लिए क्या करना चाहिए, सर उसकी जिद देखिए, कम करने के सर देखिए, जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं, जो बोल सकते हैं मेंटली चैलेंज बच्चे हैं, वो ऑलरेडी इतने, मतलब उनको खुद को भी पता चलता है कि मैं कहाँ पर खुश हूं या वो हूं। ये बच्चों की लाइफ में सर वैसे भी जो बोलते हैं ना, एक एसेंस जो हमारी लाइफ में है, हम नॉर्मल स्कूल जा सकते हैं, हम नॉर्मल घूमने जा सकते हैं, इन बच्चों के ऊपर 24 घंटे की एक निगरानी वाली चीज हो जाती है। तो कहीं ना कहीं वो चीज ना, वो अपने एक्शन से कितनी बारी अग्रेशन दिखाते हैं, वो अग्रेशन की वजह से ही वो जिद करते हैं। तो सर इन बच्चों के साथ भी यही चीज जो है ना, हम उनको थोड़ा सा एक्टिव करके, जैसे आप बोल रहे हैं कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे उनको एक्टिव कर दिया, कुछ इनमें भगवान ने ना एक अलग ही कुछ एक, जो बोलते हैं इनको ब्लेस किया हो सकता है। ये शायद बहुत अच्छा म्यूजिक प्ले कर सकते हैं या गाना गाने की कोशिश कर सकते हैं, कितनी बार ये गेम्स वेम्स भी खेलते हैं। तो हमें उसे चैनलाइज जब हम करने में लगा देते हैं, तो ये बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। और सर इनके मूड स्विंग्स तो ऑब्वियसली होंगे ही होंगे, क्योंकि वो उनकी प्रकृति में आ गया है। बट हमें लिए। पेरेंट्स को बस एक चीज बोलनी है कि कुछ भी हो जाए, ये बच्चों के ऊपर अपना टेम्पर लूज नहीं करना चाहिए। मगर पेरेंट्स को हमारे फॉलो नहीं। पेरेंट्स भी थोड़े से परेशान होकर टेम्पर लूज करते हैं, बट ये बच्चे तो वैसे ही इतने नाजुक है। मेरा तो मतलब मन भर आता है कि अगर मैं कभी भी किसी पेरेंट को ऐसे बच्चों के साथ मिसबिहेव करते हुए देखती हूँ। ओके, थैंक यू। जी सर, थैंक यू। Yes, dear kids and everybody, I think I had my session and it was a really lovely sessions. Kids, you can, what do you say, check me out on YouTube, on Insta, on FB, everywhere I am there, and you can check me out the same. Ma'am, you can just drop your link and name in the chat box. Sure, then I'll be doing the same. Okay. Fine. I am everywhere by the name of Amandeep Sethi only. On YouTube, I am with the name Amandeep Sethi. On Insta, it is Parenting by Amandeep. Okay. Yes. Ma'am, is everything over from your Yes. side? Yes, from my Over side, it is over. the official vote of thanks. I hope kids enjoyed the session. Yes. Yatharth, you can start. Okay. Hello everyone. Myself Siddharth Marjari, and I would like to propose vote of thanks after this wonderful session. It is a joyous moment that today we are able to enlighten with a topic which is crucial for today's scenario and essential for generations like us. I would like to thank my heartfelt thanks to today's trainer JFM Amandeep Sethi. Madam, your session was with full of energy. During your session, we are able to learn various phenomena along with important aspects such as good touch and bad touch. I am sure all the parents were attending this session must be convinced with your sharing. Further, I would like to thank JJ Chairperson Swaradidi and President of JCI Surat, JC Ankit sir. Congratulations to my friend Hitansh for being project chairman of this session.
I would also like to thank JC Fannel Bhai and JC Prem Bhai for technical support. Finally, I would like to extend my heartfelt thanks to all my members and parents who were involved directly and indirectly to make this event successful. Thank you very much. Jai Hind, Jai JC. Thank you, Yatharth, and thank you so much, ma'am, for the wonderful session. We are very grateful that you conducted this session. Thank you. It was my pleasure to be connected to you all, and God bless you, kids. You all are doing really great, and thank you, Ankit ji and Nitin ji, for the same. And good to see young kids like Swara, Yatharth, and Bansuri. है ना Bansuri? Bansuri. Bansuri and Hitesh. All kids, stay blessed, stay rocking, and you all will be doing really good in life. God bless you all. Do connect to me and stay in touch. Take care. God bless you. Thank you. Bye bye, ma'am. Thank you, madam. Thank you.